or Yeah, there will be there's no no classes? classes will be there, but they said they usually won't teach. Classes will be there, but they will. They'll not teach. They'll just leave for revision. हाँ, so you revise in that hours ना, why are you? देखिए यहाँ पे अगर आप क्लास छोड़िएगा फिर बाद में तो करना ही पड़ेगा, Okay. either by recording or something else, right? Yeah. है ना? So I will suggest that don't leave the classes right now. सेशन के बीच में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आपका टर्म का एग्जाम होता है ना, लाइक फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म टाइप का एग्जाम कुछ होता, then you can leave it, but for unit test if you are going to leave the classes, then like, how will you No, continue only further? on Wednesday because I have physics a lot to learn. Okay, fine. I will suggest that try to attend the class, otherwise we'll see. Okay. Okay, classify I'll the try. following. Classify the following as Fatima. Hello, Assalamu alaikum, Fatima. How are you? Walaikum assalam, sir. I'm good. How are you? I'm good. I'm good. आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना था ना, फातिमा? Yes. Oh, I forgot. हाँ, आप आई थी ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फर्स्ट लेक्चर तो किया है आपने, Yeah. So I have to join राइट? 2 o'clock. हाँ, करेक्ट। So today I ओके, have to go outside. वाई? I'm inviting someone. दावत है? नहीं तो दावत वगैरह तो ऐसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नो नो, आई हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट। सी, आप बताइए फातिमा, इन इंडियन टाइमिंग आई टीच फ्रॉम 6:30 till 10:30, right? From Saturday to Thursday. Yeah. So where will I go for dawat? Tell me. I go for dawat only on March, or if it is on Friday. Those Fridays sometimes holidays for March because you guys have exam. ठीक है? So क्या है, कितने बजे जाना है आपको बताइए? यहाँ की हाँ, वहाँ आपके 6 6 बजे। तो वहां जाके पढ़ लीजिएगा, क्या हो गया? जस्ट अटेंड द क्लास, डोंट राइट नोट्स एंड ऑल। क्या ख्याल है फातिमा? So inside, can I get the recording? सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली वैसे। जी, व्हाट वर यू सेइंग फातिमा? I was saying instead, can I get the recording? हाँ, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ये पूछने वाली बात नहीं, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, Okay. अटेंड करने की बात है, लेकिन यू अंडरस्टैंड राइट, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग से ही होता तो फिर आप सारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते, बट यू नो व्हाई द लाइव क्लासेस आर इंपॉर्टेंट, राइट? यस और नो? Yeah. But I don't चलिए, think it's possible to attend over there. अटेंड ओवर देयर, व्हाई? ईयरफोन लगा लीजिएगा, क्या हो गया? But it's not possible. इट्स नॉट पॉसिबल। लोग आपको पढ़ाकू बोलने लगेंगे, यू डोंट वांट टू बी दैट गर्ल। No, like I have cousins out there, so ओके फाइन, सो यू विल बी एंजॉयिंग योर टाइम, नॉट ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक लेक्चर ये कर लीजिएगा, कुछ डाउट होगा उसमें से तो फिर हम आपको 15-20 मिनट में समझा देंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? thank you. ओके फाइन, Hafiz, Jazakallah. ओके फाइन, बाय, टेक केयर। Okay, so you have to classify the following as allyl, vinyl, benzyl, alkyne, or aryl halide. आज गलती नहीं होनी चाहिए, बता दे रहे हैं हम आप लोगों को। लास्ट टाइम आल्सो वी डिड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? सो टुडे आई डोंट वांट एनी मिस्टेक्स।
चलिए अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, how are you? وعليكم السلام. الحمد لله fine. Fine. Great. How many of you are how many of you are starting vacations from this week? I think Muhammad Umar का इस week से है, right? Umar? So it is from the next week, 30th Next of week, June. 30th June. Yeah. Okay. Not from Thursday. No, not from Thursday, from 30th June, the next Thursday. You know, I was hearing something like it's getting very hot, so they are preponing the vacations, something like that. Okay. It's not confirmed. Actually. I've heard, It is not. You have heard the same thing. yeah, How's your health, by the way, now? yeah, I'm better. I'm You're totally better. fine. Okay. Yeah, for an entire week I was, very ill. Yeah, I know that. Yeah. Now you're No, fine, na? I was suffering from Lou. Oh, okay. Yeah. Loo. How did you get loo? बाहर घूम रहे थे आप Yes, या घर पे ही बैठे बैठे हो? गर्मी सर्दी हो गई. अच्छा, सरद गर्म हो गया. हाँ, Okay. दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं. हाँ, अच्छा. So do you guys get those? You must be getting that, na? Raw mangoes, like not ripe, Yeah. unripe. है ना? Yeah. अच्छा. So everyone is done. Yes or no? Please tell me. 5 questions. Fahad, Huzaifa, Adriel, Umar. Is everyone done? No. Send your answers in chat. Na? You can send the answers in chat. But please send one message. Okay. ऐसा मत कीजिएगा कि you have one message like this. A का answer ये है. Then there is another answer. B का answer ये है. So just send it one message. A का answer ये है. B का answer ये है. C का answer ये है. Like this. How many of you are coming to India in the vacations? No one. Oh. Huzaifa is coming. When you will be reaching India, Huzaifa? 4th July. July. Okay. But class attend कीजिएगा, ठीक है? इधर इंडिया में आके ऐसा नहीं किया. Yes sir, yes. See, you have to first of all identify. We have in all of these molecules, we have a carbon halogen bond. First of all, you identify whether this carbon is going to be sp3 or sp2. Okay. First of all, identify that. Then only you have to identify if it is sp3, then there can be 3 possibilities. It can be either alkyl halide,
It will be allyl halide or it will be benzyl halide. In sp2 there is only two possibilities, that it will be vinyl or allyl. ठीक है? First of all, classify this carbon as sp3 or sp2 and then only start writing this alkyl vinyl. I hope everyone must have attempted at least, right? So for the A1, tell me this carbon was sp3 or sp2? This carbon is sp3 or sp2, guys? Yes, Mohammed Umar, correct. Tell me in chat, sp3 or sp2? This A carbon is? Mohammed Umar, correct for the second one. Yes, correct, Fahad. Very good. Acha. Now, Fahad, you tell me. This sp3 is attached to which group? और उसके बाद फिर नाम बताइए कौन सा हो जाएगा. Very good, Fahad. ठीक है, चलिए. I hope now you guys can continue. हाँ, ठीक है. C is okay, correct. D correct. E correct. Yes, Mohammed Umar. Very good, Mohammed Umar. Mohammed Umar is done. Who else is done? Please raise your hand now in your textbook. In your notebook, whoever has written all the answers, please raise your hand. जिन लोगों ने भी identify कर लिया है. Adriel, Fahad, Huzaifa, no one. Is that so, Mohammed Umar? Huh? In organic chemistry, 11th standard is very important. I think only on the basis of 11th standard you can have some kind of mastery on the 12th standard organic chemistry. Not all the 11th standard. I mean, hydrocarbons is not very much important. It is important, but I will say that the basics, some basic concepts in organic chemistry, that chapter, general organic chemistry, is way more important than hydrocarbons of 11th standard. Okay, Fahad, tell me, किसमें प्रॉब्लम हो रही है आपको ABCDE में? Fahad, please tell me, किसमें प्रॉब्लम हो रही है? B1. So tell me, what is this carbon? sp3 or sp2? Okay, Fahad, tell me, this carbon is sp3 or sp2? यही आप गलती कर रहे हैं ना. देखिए, क्या डबल बॉन्ड है इसमें? ये बताइए आप, डबल बॉन्ड है? फहद, कैन यू प्लीज टर्न द माइक ऑन? फहद, दिस कार्बन डज इट हैव एनी डबल बॉन्ड? हाँ फहद, No, only single bond. ओनली सिंगल बॉन्ड. सो लास्ट तो क्लास में sp3 बताया था ना हमने, sp3 होगा, है ना? Yes, yes. तो फिर बताइए, sp3 है, उसके बाद ना ही ये बेंजाइल है ना ही ये एलाइल है. सो इट विल बी व्हाट? अल्काइलिक हैलाइड, राइट? दिस विल बी बेंजाइल. Yes, yes. हुजैफा और एड्रिल, आप लोग के भी आंसर्स नहीं आ रही, ये क्या बात है? हाँ, यस हुजैफा, टेल मी व्हाट हैपेंड. कौन से में दिक्कत है आपको हुजैफा? Okay, I will explain D. Fine. You tell me the answer for C. You tell me the answer for E ना, Adriel कम से कम. D हम explain कर देंगे. हुजैफा, you tell me, आपको किस में दिक्कत आ रही है? हुजैफा, can you please turn the mic on and tell me? हाँ, Yes, बताइए. sir. Yeah, tell me. C, sir. C and D. ठीक है, C and D. Now you keep your mic on. First of all, tell me what is this carbon? Is it sp3 or sp2? sp3 है, sp2 है? sp2. If it is sp2, अब बताइए Yes, ये क्या sp2. होगा? Either it will be vinyl. एक ही चीज तो बार बार कह के आप लोग एकदम बिल्कुल बोर कर दीजिएगा हमको. विनाइल है या एराइल है? बताइए अब. हुजैफा, टेल मी. लुक एट द डेफिनेशन एंड टेल मी ना. ऐसे कभी नहीं आएगा, ठीक है? आप सोचिएगा कि हमको बस देखते ही आ जाए, कभी नहीं आएगा. sp2 हो गया. अब उसके बाद यू नो दैट देयर इज टू ऑप्शंस, विनाइल और एराइल. डेफिनेशन देखा आपने दोनों का, विनाइल और एराइल का? बस क्या दिक्कत हुई? हमने कुछ बताया आपको? हुजैफा, टेल मी. डिड आई टेल यू एनीथिंग?
हुजैफा? No, no, sir. नो ना, आई आस्क्ड यू ओनली ना। सो ये सेम सवाल आप खुद भी कर सकते थे खुद से, राइट? अब इसमें बताइए आप, इस डी वाले में क्या है? इज इट sp3 और sp2? डज इट हैव एनी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? sp3. sp3 है ना, ये देखा कीजिए, sp3 है। अब इसमें बताइए 3 केस हो सकते हैं इसमें, आइदर इट विल बी एल्काइल और इट विल बी एलाइल और इट विल बी बेंजाइल। बताइए अब कौन सा होगा? यस हुजैफा, फास्ट। हुजैफा टेल मी। अच्छा ये बताइए बेंजाइल है क्या? नहीं, नहीं बेंजाइल बेंजाइल नहीं नहीं है. है, बेंजाइल नहीं है। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अल्काइल, एल्काइल और एलाइल के डेफिनेशन भी देखिए, उसके बाद बताइए इन दोनों में से क्या है। सेम इट इज गोइंग फॉर आर्ट्रियल आल्सो, ओके? आर्ट्रियल यू आल्सो ट्राई टू आंसर द सेम क्वेश्चंस, राइट? आपको डी में प्रॉब्लम थी। Allied. हाँ, क्या हो गया, बस अलाइल है। कुछ हमने बताया? Yes. हमने कुछ बताया? हमने क्या बताया? नहीं, ये सर क्या बोल रहे हैं? नहीं तो सर. फिर ये नहीं, नहीं बताइए। मतलब हाँ ठीक है, ये बताइए sp2 है sp3 है? हमने तो sp2 लिख दिया, यहाँ बता दिया हमने आपको। ये वाला आपका एराइल होगा, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट दिस आंसर। आ गया yes, हुजैफा? यस और नो? जी सर. बिल्कुल। देखिए जब तक आप लोग हाथ नहीं चलाइएगा तब तक कुछ नहीं चलेगा। हम ये क्यों हम पूछते हैं ऐसे करके, क्यों लिखाते हैं यहाँ पे? क्या है sp3 sp2 है? बिकॉज ओनली इफ यू विल मूव योर हैंड देन ओनली विल योर ब्रेन विल वर्क। एक मेरे टीचर थे, वो कहते थे कलम चलाओ दिमाग चलेगा। ठीक है, कलम चलाओ दिमाग चलेगा। दैट मीन्स इफ यू मूव योर पेन देन ओनली योर ब्रेन विल वर्क। ऐसे बैठे बैठे घूरने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, इफ यू विल जस्ट कीप लुकिंग एट इट नथिंग विल हैपन। डी इज अलाइल ना फहद? सी दिस इज sp3 and sp3 carbon, it is attached to carbon double bond carbon, that means it is allyl। लिखने में गलती हो गई क्या आपको? k और l तो बहुत सामने सामने होता है। it is allyl, okay, not alkyl, it is allyl। got it Fahad? yes or no? please tell me, turn your mic on and tell me yes or no जल्दी। Yes, sir. okay fine, very good। चलिए now we will move to nomenclature। देखिए nomenclature हम लोगों ने लास्ट टाइम तो नहीं कर पाए थे, है ना? इसी में फंस गए थे हम लोग पूरे sp3 sp2 में, भाई। now we will do nomenclature। आज nomenclature ही होगा आई थिंक। अच्छा, one question for Mohammed Umar is that it is a salt बुड़बक। मोहम्मद उमर, NaCl क्या होता है? हाँ उमर, टेल मी व्हाट इज NaCl? Sir, salt. हाँ तो उसी के लेवल में तो है NaBr। Okay, salt. But if you will ask me what is Br negative or Cl negative, then I will say that Yeah. these are nucleophiles, okay? Which file? Nucleophile, that means they are attracted Nucleophile. towards it, they're nucleophile, okay? Okay, okay. अच्छा, one thing मोहम्मद उमर is that if you want, अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप हालोअल्केन हालोरीन थोड़ा पढ़ चुके हैं क्लास में, एंड आप थोड़ा आगे वाले बैच में जाना चाहते हैं ना, जो थोड़ा सा आगे है इस बैच से, सो वी विल स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना? यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कर दिया है। सो विल यू बी फाइन इफ आई मूव यू टू सम डिफरेंट बैच? Sir, I will see and then I will check. Okay. ओके फाइन, ओके। सो Sir, लेट अस स्टार्ट विद what are the timings of that batch? टाइमिंग्स ऑफ दैट बैच। यू हैव Yeah. एन ऑप्शन सैटरडे संडे। Hmm. कैन यू डू सैटरडे संडे? Yeah. बोथ What are the टाइमिंग्स आर timings on Saturday? सैटरडे संडे आपके यहाँ। I start at 9 o'clock, so I think it will be what 6:30, 6:30. Okay. Okay. And what is the other option?
Other option is on Tuesday, Thursday. Tuesday, But Thursday. this is the most, I will say that this Saturday, Sunday batch is like काफी ahead. जहाँ पे हम लोगों ने वो भी खत्म, method of preparation completely finished. In Tuesday, Thursday, some of the method of preparation is done. Tuesday, Thursday में you have an option of 4, same timing as yours today. Okay. ठीक है? Tuesday, So Thursday. maybe if you can come tomorrow and आप देख लीजिएगा, है ना, समझ में आएगा तो फिर वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो आप लोग क्या बोलते हैं, उस बैच में भी जो ऑर्डर है पढ़ाने का वो हमारे स्कूल वाला यूज कर रहे हैं ना? हाँ, जी। अच्छा, ठीक है। देखिए स्कूल वाला ऑर्डर तो इन द सेंस हम ऐसे चलते हैं कि चेंज बहुत, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया ना, बिकॉज देयर इज नॉट वन स्कूल, राइट, देयर आर मेनी स्कूल्स और सब चैप्टर्स के हिसाब से। चलिए अब देखिए 10 दिन की बात है, उसके बाद तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, है ना। हम तो सीक्वेंस वाइज फिर स्टार्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक बैच में चल रहा है, वो सारी चीज़ों को हम देख के, बिकॉज 10 दिन के बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, राइट, सो आई डोंट हैव टू, okay, so write nomenclature. Now in nomenclature what we will do, I will give you one example of nomenclature and then I will also give you the answer, what is the name of that molecule. Then we will look at the name and see that what is that name composed of and how many parts are there for that name. So this is the structure we'll be looking at and I will also give you the name. This is from NCERT only. So NCERT is saying that the IUPAC nomenclature, IUPAC name for this molecule is going to be this 1,4-bromopentene. Okay. Now, what we are going to do, this 4-bromopentene, it is composed of a few fragments, or I will say few parts. So I will say that this E is one part, this En is one part, this pent is one part. Each and every part is telling me about something. Okay, each and every part is telling me about something. Okay, E is there, En is there. Then I have pent. Pent is telling me about something else. And then I have bromo, which is telling me about something else. Bromo is telling me something else. Okay. So especially Fahad, Huzaifa, and Adriel. Okay, आप लोग ध्यान दीजिए, because I think Abdul Rahman and Muhammad Umar, both of you know how to do IUPAC nomenclature my way, right? In 11th standard, I have taught you guys. So Adriel, Huzaifa, and Fahad. Okay. So this E part, I will say that it is telling me that there is no functional group, no principal functional group is present. Okay, there is no functional group here. And this En, what it is telling, I hope many of you will understand this. En is telling me that there is a double bond. That means it is telling me about unsaturation. That is why I taught you guys unsaturation in the first lecture only. It's telling me about unsaturation, right? And then we have this pent. This pent is telling me that there are 5 carbons in the parent chain. So it is telling me about the parent. And this bromo is what? This bromo, it is telling me about the substituent. It is telling me about the substituent. That means each and every IUPAC name, it will start with substituent, parent, unsaturation, and then functional group. So what are these different parts of a IUPAC name? An IUPAC name is composed of 4 different parts. What are those 4 different parts? You will have substituent, then you will have parent, then you will have unsaturation, and after that, at last, you will have what? You will have functional group. Okay. So the first thing that you have to do is to identify the functional group. What is the functional group present? I will write a few names, but I hope that you recognize these names at least. Oic acid. Fahad, Huzaifa, and Adriel, tell me, you know na, oic acid kabhi-kabhi naam mein aata hai, yes or no? At the end of the name, you have oic acid. You must have heard some names, right? Yes, sir. Right? Huzaifa and Fahad, what about you guys?
Yes, sir. Yeah, word na. And what is the group that is present? If the COOH group is present, then it is what? Oic acid. Now, next is, you will also heard some names which are O8. Now, if O8 is present, that means which group is present? We have COOR. Now, I'm skipping a few functional groups which are not very much used. They're not very much used. For example, I have skipped the sulfonic acid group. Sulfonic acid group I have not mentioned here. Then we have amide. Now, again, I have skipped the group that is oil halide. Again, why I have skipped oil halide? Because it is not in the 95% of IUPAC names that you will be looking, the molecules that you will be looking in the NCERT textbook, it will not have the oil halide. Okay, so 5% में आ जाते हैं आपके पास sulfonic acid, oil halide, and these type of very rare or rare functional group. Amide will be CONH2. Now, after that, we have nitrile. Nitrile is CN. Then we have AL. AL is used for aldehyde. Then we have ONE. ONE is used for ketones. And after ketones, we have amine. No, after ketones, we'll have alcohol, which is OH, followed by amine, which is NH2. Okay, which is NH2. Now, all the IUPAC name will end with either of these, or if none of them are present, if any of them is not present, then we end the name with E. Adriel, Huzaifa, and Fahad. Is this clear, yes or no? Yes, sir. Okay, fine. So what What did you about say this? about the last, the E? E. If any of these is not, if none of these are present, neither you have COH, COR, CONH2, CN, aldehyde, ketone, alcohol, amine, then we end the name with E. Then for functional group, we write that E is present. That means what does E represent? E represent that none of the principal functional group are present in the molecule. None of the principal functional group is present in the molecule. Now, in unsaturation, if you have double bond, then we write it as En. If you have triple bond, then we write it as Yn. We represent it as Yn. And if you have both double bond and triple bond, then it is how it is written. It is written E9. Okay, En and then Yn. So whenever we have double bond and triple bond, both come under unsaturation, right? Both come under unsaturation. And in unsaturation, when you have double and triple, then you arrange them in alphabetical order. That means En pehle aayega and Yn baad mein aayega. So always, whenever you have both double bond and triple bond, then it will be written as E9. Now, further specific cases, I will teach you guys when we have different type of molecule, but itna yaad rakhiye, when it is double bond, it is En, when it is triple bond, it is Yn, when it is both, it is E9. Now, let us look at the parent. Now, in parent, what you have? In parent, you can either have meth if there is one carbon. You can have eth if you have two carbons. Prop, bute, pent, hex, hep, and so on. Okay. Okay, is my voice lagging for everyone? No, No, sir. sir. Okay, fine. Okay. Fahad, when your connection gets a bit stronger, then just let me know which part did you not hear. Then I will re-explain it. Okay. Now, parent will be meth, eth, prop, bute, pent, hex, or hep. And also remember, we add cyclo before, and we will prefix it with cyclo, prefix cyclo if ring is present. If ring is present. Now, the substituent. Now, let us look at the substituent. Now, what is substituent? After the identification. Now, please remember this line very. Please remember this line. After the identification of parent, unsaturation, and functional group, after the identification of parent, unsaturation, and functional group, whatever remains in the molecule is substituent. Whatever remains is substituent. Okay, whatever remains is substituent. So, what is substituent? You can either have substituent such as NO2, is known as nitro, or what else you can have? You can have OR, is written as alkoxy, or you can have halo, that means halogen X group. Then the halo can be written as fluoro if fluorine is present,
chloro, bromo, and iodo. And the other type of substituent that you can have is R group. That means alkyl groups, such as methyl, ethyl, propyl, and so on. Okay, so the YL represent that it is a substituent. So please write this whole thing down. This is going to help you in IUPAC nomenclature. And ये अगर आपके पास है, then you have some kind of framework in your head, and you can build upon this framework. Okay, you can build upon this framework. I will not say that all the IUPAC nomenclature is inside this, but this is the base that you can build upon. Okay, write this down. Let me know when you're done. Then we will see how we can use this framework, and we can come up with this name 4-bromopentene. Okay, we'll come up with this name 4-bromopentene, and then we will do some more examples. Done all of you? Yes or no? Please tell me. So what's the second one under substituent? ये OR, alkoxy. Alkoxy. जब हम लोग ether पढ़ेंगे ना, the next chapter alcohol, phenol, and ether, in that you will understand what is alkoxy. So in this chapter, in this chapter, not all of these things will be used. Please remember, functional group you will never see anything. You will only see E. There will be no functional group because haloalkane, haloarene, they will come into the substituent category, right? So just write this down, but this is going to help you in all the subsequent chapters also. Alcohol, phenols, and ethers. Alcohols, phenols में alcohol आ जाएंगे, right? Phenol में भी आपके पास alcohol आ जाएगा. Ethers में आपके पास alkoxy आ जाएगा. Then we have aldehyde, ketone, carboxylic acid, है ना? And in carboxylic acid, you will also learn about esters. Then nitrogen-containing compounds are remaining. That is amide, nitrile, and amine. सारे chapters हो गए इसी में, right? चलिए. Also NO2 will be there in nitrogen containing compounds. हो गया सबका? Yes or no? Please tell me. Yes, Adriel, Huzaifa, and Fahad. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? No, sir, 2 minutes. 2 minutes. Okay, fine. 2 minutes. But again, read once and then write once. Don't read one thing and write one thing. ठीक है? So in unsaturation, that second one is triple bond, right? Yeah, TB, triple bond. Triple bond. Triple bond, correct. Huzaifa, how was your organic chemistry in 11th standard? Same as Yes, sir. other. How was your organic chemistry? Same as other chemistry? I mean, same as inorganic and physical, or it was weaker or it was stronger? Oh, like my personally? Personally, हाँ, organic chemistry. Yes, I was very weak. Organic chemistry में. Yes, sir. But don't worry, things will change. Okay, things will change. Once you start Yes. naming things, है ना? आप अगर पहचान लेंगे तो फिर आप देखिए, सबसे पहला क्या होता है, इंसान को आपका नाम जानना, right? If you know the name, then only you can understand something, right? And what is very beautiful about organic chemistry is that, जैसे आप मेरा नाम जानते हैं सालिम, but you don't know anything about me, right? You just know that I teach things, है ना? सालिम सर अगर कहीं पे आप देखिएगा तो फिर आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये टीचर है. सिमिलरली अमीन आपको अगर कहीं दिख गया, किसी के नाम में अमीन दिख गया, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन कौन सा रिएक्शन देगा. ठीक है? दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट nomenclature. We have relationship between structure and reactivity. Structure, name, and reactivity. चलिए, फहद हो गया? Substituent part. Okay. Is there anything that you have doubt या फिर आपको पूरा ही समझना है? ये बताइए. अगर आपको पूरा समझना है, then I will say that just hold on to whatever you know right now. जो भी आपको समझ में आ रहा है. When we will do example, then it will be more clear. क्या ख्याल है फहद? Can I move on to example? Yeah, no problem, sir. Example. No problem, right? Okay, Abdul Rahman and Muhammad Umar, I hope you guys are okay with nomenclature. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, right. Okay, fine. So I will take the liberty of focusing on Fahad, Huzaifa, and Adriel more because they are learning this method of IUPAC nomenclature for the first time. ठीक है? चलिए. So we will take the same example here. और इसका नाम तो हम लोग को पता है. Then what we will do? We will try to see and apply this formula here. Okay. So
We have this. Now, all of you will not write anything. You will just look, you will just be looking here and I will be asking you questions. Okay, I will be asking you questions here. So अब इसमें बताइए, what is the functional group? Is there any functional group that you can see from this list here? Is there any functional group that you can see from the list here? Yes or no, tell me. Adil, Fahad and Huzaifa. Can you see any functional group in this molecule and the list? Yes, sir. Which functional group is there? Tell me. Bromine. नहीं तो bromine तो इस list में नहीं है ना? Oh, okay. Okay, Yes, so yes. I'm asking about the list. ठीक है? I'm asking about the list, not the general definition of functional group. I'm asking about the list. Is there anything? No. 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 Okay, I will answer you, Mohammed Umar, but I don't think now is the time. ना? थोड़ा क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे. Okay, sir. Sure. Okay, ठीक है. चलिए. So functional group is there. Now functional group is no functional group. So what is the word for if you don't have any functional group? We represent it as E. Correct? Yes or no? Fahad, Huzaifa and Andrew, tell me what is the unsaturation? We have double bond, triple bond, or anything? Do we have double or triple bond? Yes. Huzaifa, Fahad, Adriel. Yes, sir. Double bond we have, right? Sir, So EN. what is? Double bond. So very good. So double bond is there, and we represent double bond by En. Okay. Now the next thing is parent. Now I will remove one of the myth and misconception that you have. How to choose parent? Tell me. How to choose parent? Longest carbon chain. This is the whole thing about organic chemistry, which cannot be further wrong. Now I will tell you something that you may find controversial, but parent chain is not the longest chain. Repeat after me. Parent chain is. Repeat after me. Parent chain is not the longest chain. अरे बोलिए तो. Fahad, Huzaifa and Adriel. Parent chain is Not the longest chain. not the longest chain. बहुत तकलीफ हो रही है बोलने, but still बोलिए. Parent chain is Not the longest thing. not the longest chain. So what is the parent chain? See, now you will understand. आपको याद आएगा. आप parent chain choose करते थे. सर यहाँ से लेके ऐसे करके ना parent chain लंबा रहा है. Then your teacher will be saying no, you have to go this side because there is a functional group here. You don't have to choose this one, है ना? तो बाद में conditions आते थे जब आप 11th standard में करते थे. Those conditions should come first only. So please you will note. I hope you have not written anything. You will not write anything. But listen, the parent should be chosen such that it contains the functional group. If not, that means if the functional group is not present, if not, then double bond. If not, then triple bond. That means if double bond is not there, then it should contain the triple bond if it is present. Triple bond. If not, then maximum number of, should choose it like that. You should choose it in such a manner that it should contain the maximum number of substituent. If not, then the longest chain. Can you see the priority of longest chain? It is so low, right? The longest chain is so low. So what you have to do, you will never start with the longest chain. You will see if there is a functional group, then I should be choosing that particular chain which is containing functional group. Okay, that is containing functional group. And also write one more point. In open chains, the parent should be
फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल। That should be right now. नहीं रुकिए तो, फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल अभी मत कुछ लिखिए, फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल, दैट मींस यू शुड स्टार्ट विद द टर्मिनल कार्बन, दैट मींस एंड कार्बन, और वो खत्म भी कहां पे होगा, दूसरे एंड में खत्म होगा। सो यू हैव टू चूज द पेरेंट इन सच अ मैनर, ऐसा नहीं कि यहां से कार्बन, आई थिंक यू नो दिस बट स्टिल आई एम टेलिंग, यहां से कार्बन स्टार्ट किया, ये डबल बॉन्ड मिल गया, यहीं पे छोड़ दिया हमने, बस यहीं तक है। नो, you have to end it with the last carbon, whatever you can see. So first of all, whenever you are choosing the parent, you have to see how many terminals are there. तो आखिरी में कितने कितने कार्बन है। So as you can see, this carbon here, it is the terminal carbon. Yes or no? Can all of you see that this carbon is terminal, right? And we have this carbon terminal, correct? So we have only two terminals, that is A and B. And what will be our parent? So parent, we don't have any functional group, but there is a double bond. What we will do, we will be choosing the parent in such a manner that it contains double bond. So this will be our parent, starting with the A terminal, ending with the B terminal. So for parent, do you understand what you have to do now? First of all, you will choose, see how many terminals are there. अभी यहाँ पे बस दो terminal दिख रहे हैं आपको, but there will be some cases in which you will find there are multiple terminals, A, B, C, D. Now from those, what you have to choose, the one which is containing functional group, if not double bond, if not triple bond, if not, then the maximum number of substituent, if not, then the longest chain, if not, then the longest chain. Okay. Now, but longest chain तक की आपको तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Either you will get the parent with double bond, triple bond, or functional group only. Okay. For this one, tell me how many carbons are there in the parent for this structure. Please count and tell me how many parent में कितने आ रहे हैं? 2 carbons. No, this is the parent ना. क्या समझ लिया आप लोगों ने? हमने क्या बता दिया ऐसा? ओहो, अच्छा, is this a carbon? Yes or no, tell me. हाँ, Adriel, फहद एंड हुजैफा, ये भी तो कार्बन है। नो, पहली बार देख रहे हैं आप लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? फहद एंड हुजैफा, टेल मी। फहद, हुजैफा, एड्रियल। 5. नो, वो नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं फहद एंड हुजैफा, टेल मी, दीज आर आल्सो कार्बन्स, यस और नो? Yes, yes, sir. तो कितने कार्बन हो जाएंगे बताइए आप पेरेंट में? 6. नहीं, गिन के बताइए ना, ऐसे कैसे? हाउ मेनी कार्बन्स? Okay, yes, 5. 5. 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है। सो वी आर जस्ट काउंटिंग द कार्बन्स, वी आर नॉट नंबरिंग द कार्बन्स राइट नाउ, ठीक है। वी हैव काउंटेड द कार्बन्स एंड देयर आर 5 कार्बन्स, ठीक है। 2 क्यों बोल रहे थे भाई आप लोग? ये ध्यान नहीं था क्या हुजैफा, और वाज देयर समथिंग एल्स? No, sir, I was confused. ठीक, ये याद नहीं था आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस हो जाएगा, डोंट वरी। पेरेंट विल बी 5 5. कार्बन्स and it will be pent. Now we have chosen the parent, sorry, chosen the parent, and we have also seen the functional group, unsaturation, everything, ठीक है। Now hydrogens को तो नेम नहीं करते, I hope you all know that. The only thing that is remaining here is the Br, correct? Yes or no, please tell me. So what will be the substituent? Substituent will be Br, and what is the name for Br? Br को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Bromo. Very good. Bromo. Now comes the part for numbering, है ना? How to number the carbon. इसमें भी बहुत तकलीफ होती है लोगों को, right? Here also you get too much problem. Numbering कैसे? Numbering में बहुत मिस्टेक होती है सर. So how will you number? Terminal तो पता है आपको now. You know what is terminal. So you start with the terminal which is nearest to functional group, if not double bond, if not triple bond, if not substituent. बात समझ में आ गई? Yes or no, tell me. यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग को तो लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
कंफ्यूज कैसे होते हैं? आप लोग बोलते 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर करें, या वी शुड नंबर इट 1 2 3 4 5, because in both the cases you will get either the double bond in the second position or the Br in second position, right? लेकिन now what I have given you, I have given you a complete formula. क्या करना है आपको? You have this parent, we have this parent here. Tell me, where should I start from? The A terminal or the B terminal? कौन से टर्मिनल से स्टार्ट करें? Fahad, tell me why B? Fahad, can you please turn your mic on and tell me, Fahad, why B? Arey Fahad, what happened? Huzaifa and Adil, can you please send your answers in chat? Where should I start numbering from? A or B? Okay. Huzaifa, what do you think? Where should I start the numbering from? A or B? Chat. Oh. Chat. Okay. And okay. Fahad, आपने आंसर नहीं किया. Why should I start from B? Tell me. Fahad, why should I start from B? Please turn your mic on and tell me. Okay, tell me you just guessed it ना, अगर नहीं पता. Is Fahad not here? I don't know. ठीक है. एक तो Adriel. What is the functional group? What is the functional group, Adriel? हाँ. Okay. Okay. बताइए आप कहाँ से start करें? A. Very good. We'll start with A because we don't have any functional group, but there is a double bond. We'll start with this terminal. ठीक है? And this method is going to help you so much. 1 2 3 4 and 5. That means the bromo will get the fourth position. Then the En will get second position. And then done. Your name is done. You start with here 4 bromo. Pent 2 ene. See? 4 bromo pent 2 ene. 4 bromo pent 2 ene. Okay. Now you write this down. Write everything down. Just start. I will give you some questions after the Azan ends. Okay.
Is everyone done? No. Okay. अच्छा, I'm just wait a second. Wait for a few seconds. Okay. नहीं कीजिए बाद में करते हैं इसको. Please do this. Write this down. उसके बाद हम have to change some settings here. Write this down. Let me know when you're done. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Fahad, what about you? Done? Yes, Fahad. Okay. Done. Okay. Fine. Chalo. Let us write some questions. एक तो आप ऐसे सिंपल सा लिख दीजिए. बाकी I will be giving you something different.
इसका आंसर बताइएगा बस आप लोग, उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू डील विद दीस टाइप ऑफ कंडेंस स्ट्रक्चर्स. ओके, give me the name for the first structure A1. Then we will look at the rest. चलिए. So for the first one, tell me what is the functional group? Yes, guys, tell me what is the functional group? What happened? None. तो इतना देर क्यों लग रहा है आप लोगों को? जल्दी बताइए. None. So we represent it by E. अच्छा, अनसैचुरेशन क्या होगा बताइए? Do we have double bond or triple bond? No. Do we have a, no? तो फिर क्या यूज करते हैं? AN. Okay. If there is no double or triple bond, then we use AN. वो हम शायद लिखना भूल गए थे यहाँ पे ना. Right, okay. If we have no double and no triple, then we write AN. Okay. If there is no double or no triple, then we write it as AN. ठीक है. पेरेंट क्या हो जाएगा? तो टर्मिनल कौन से हैं आपके पास? वी हैव द रेड टर्मिनल एंड देन वी हैव द ब्लू टर्मिनल. ठीक है, बस दीज आर द लास्ट टू एंड ऑफ कार्बन्स. So how many carbons are there? Can you please count it and tell? How many carbons are there? 4. Fahad, can you please turn your mic on? Yes, sir. आपने 2 कार्बन बताया, क्यों ऐसा? लाइक अच्छा, आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिक्कत है, इसको आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. कैन यू एक्सपैंड इट एंड राइट इट लाइक CH3 CH2 CH2 ऐसे करके? यस फहद, टेल मी यस और नो. फहद, कैन यू प्लीज टेल मी? नोन एज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन. इसमें दिक्कत है आपको? अरे भाई जल्दी बताइए फहद, इतना लेट यस और नो आंसर में क्यों लगाते हैं आप लोग टाइम? कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? Yes, sir. हाँ बताइए. problem. you have no problem or you have problem with? हाँ, I have problem. you have. अच्छा, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर आपको दिक्कत हो रही है, सी each terminal and vertex. वर्टेक्स जानते हैं ना? कॉर्नर represents carbon with appropriate number of hydrogens. ठीक है, तो एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो सकते हैं, राइट? वन कार्बन हैज, इट कैन हैव हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स. ठीक है, तब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्मिनल कितने हमारे पास? एक है. देन वी हैव अ कॉर्नर 2 3 एंड 4. तो कितने कार्बन हो गए? टेल मी हुजैफा, बताइए कितने कार्बन हो गए? हाउ मेनी कार्बन्स? 4 कार्बन. 4 कार्बन्स, राइट? तो इसको देखिए एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे कार्बन 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 लिख दिया आपने. तीसरे वाले कार्बन के पास Br है तो Br लिख दिया आपने. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? हुजैफा, ये फहद बताइए, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? No, sir. नो. अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है बताइए? दिस कार्बन हैज हाउ मेनी बॉन्ड्स? टेल मी. द फर्स्ट कार्बन
फर्स्ट कार्बन हैज हाउ मेनी बॉन्ड्स? यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 1. 1 बॉन्ड दिख रहे हैं. सो द रेस्ट, अच्छा कितने बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन के? कार्बन शुड ऑलवेज मेक 4 बॉन्ड्स. कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 4. 4. कार्बन के पास जब यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है तो बाकी 3 बॉन्ड किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन के साथ. वो हम लोग नहीं दिखाते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में. समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके. सो यहाँ पे इसका ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बताइए? Double. नहीं, डबल नहीं है. नहीं है, डबल नहीं है एकदम. 2 बॉन्ड्स. टेल मी कितने बॉन्ड्स? 2 bonds. डबल और 2 समझ में आ रहा ना फर्क? देयर आर 2 सिंगल बॉन्ड्स. Yeah, yeah, 2 single. हाँ ठीक है. वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट हियर. ठीक है. एच, बाकी 2 किससे बनेंगे? हाइड्रोजन के साथ बनेंगे. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. देन वी हैव दिस कार्बन. दिस कार्बन इज मेकिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2. 2 कहां से महाराज? 3 है ना. 3 नीचे भी तो एक बॉन्ड है. कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड है. सो हाउ मेनी हाइड्रोजन विल बी अटैच्ड हियर? इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 1. वेरी गुड. एंड देन द लास्ट कार्बन विल हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? टेल मी. 3. वेरी गुड. ठीक है. चलिए. नाउ द पेरेंट विल बी हाउ मच? 4 कार्बन्स, राइट? यस और नो? Yeah. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेल मी. आ रहा है ना? ब्यूट. वेरी गुड. ब्यूट. That means we have done this part. Functional group unsaturation parent. What is remaining? The Br is remaining. This will be our. This will be our what? This will be our substituent. So this substituent will be what? Br. It will be written as bromo. Now we have 2 terminals. We have the red terminal and let us say the green terminal. Please tell me in chat, where should I start from? Red or green? Where should I start from? Red or green? Okay, Adriel. Waiting for Huzaifa. Muhammad Umar and Abdul Rahman, you also can answer. Please answer. Where should I start the numbering from? In the chat, but okay. Answer him in chat. Where should I start the numbering from? Red or green? Adriel, your answer is right. Yes, Umar, very good, correct. Okay. Fahad, can you explain why? Fahad, can you please turn the mic on? इतना टाइम नहीं है ना कि आप बिल्कुल हमको इंतजार कराएं, 3 बार हम पूछे उसके बाद आप एक जवाब दीजिए. कैन यू प्लीज टर्न द माइक ऑन फहद क्विक? Yes. क्या है रूल? स्टार्ट विद द टर्मिनल. रीड दिस. पढ़िए इसको जोर से. Start with the terminal which is proof, functional proof, and double bond. not and. If not, If not, double bond, double bond. If not, triple bond. if not, what is this? What? लास्ट वन है सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है. तो बताइए फंक्शनल ग्रुप है क्या हमारे पास इस वाले इसमें? डू वी हैव एनी सब्स्टिट्यूएंट? सॉरी, डू वी हैव एनी फंक्शनल ग्रुप? डू वी हैव एनी फंक्शनल ग्रुप इन दिस स्ट्रक्चर? टेल मी यस और नो. अरे सी द फंक्शनल ग्रुप ना. नहीं है ना भाई. नो. डू वी हैव एनी डबल बॉन्ड? No, no. डू वी हैव एनी ट्रिपल बॉन्ड? No. देन वेयर शुड आई स्टार्ट द टर्मिनल? कौन सी टर्मिनल? सब्स्टिट्यूएंट से नजदीक कौन सा है? ग्रीन वाला है, रेड वाला है? Green. तो फिर आपने रेड क्यों कहा? गेस था. टेल मी इट वाज अ गेस ना. प्लीज टेल मी इट वाज अ गेस. गेस नहीं होता तो ज्यादा दिक्कत है ना. गेस नहीं है यानी कि यू हैव सम मिसकंसेप्शन. वाज इट अ गेस? यस और नो? सॉरी, व्हाट डिड यू से फहद? No, sir. वाज इट अ गेस? इट वाज अ गेस. ओके. सो इट विल बी 2 ब्रोमो. लिखिए, नाम लिखिए इसका. सेंड द नेम इन आंसर. नाम लिखिए इसका आंसर में.
Abdurrahman, take care of the spaces and hyphens also, right? So whenever you have letters and words, letters and words क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, letters and digits, they are separated by hyphens. Okay, please remember that. So जो आपने 2 लिखा है उसके बाद एक हाइफन होगा, डैश होगा, then you will have, उसके बाद वर्ड्स के बीच में, that means लेटर्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है? IUPAC nomenclature is so rigid about these things. बाकी लोग भी नाम लिखिए इसमें, क्या नाम होगा इसका? This bromo will be 2 bromo. हाथ ही नहीं चलाते लगता आप लोग, बिल्कुल। Yes, arterial correct. Waiting for others. Abdurrahman, Fahad, Huzaifa, जल्दी लिखिए भाई. You guys take. नहीं आ रहा तो just let me know that you are getting stuck. But that decision should be fast, whether you know or you don't. If you know, just write the answer. If you are getting stuck, if you are getting confused, तो वो भी आना चाहिए आपको, ठीक है? And see, we are here to learn. आपको कुछ नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम वो भी पढ़ा देंगे. If you don't know anything, like छोटी-छोटी चीजें भी नहीं आती है तो that's not an issue. फहद अजीज, आप ये ई तो भूल गया, ये ई भी लिखना होगा ना आखिरी में, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये ई तक जाएगा. एंड व्हाट आई सेड दैट digits and letters, these have, what you have to do, these are separated by a dash. That means when you write, as soon as you write 2, and then you have to write bromo, so then this will be 2 bromo, and then rest of all of them are what? These are letters only, so there will be no spaces, no hyphens, nothing. 2 bromo butane. This is the way how you are going to write it. Clear है सबको? Yes or no, please tell me. Is this clear? Yes or no, please tell me, guys. Yes, sir. चलिए, for the B structure, the first thing is that how do you convert this into expanded form? कहाँ पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन से, which carbon is having which of the groups? So the first thing that you have to do is you have to ignore the brackets and write carbon which are not in brackets. So what you will write? You will write CH3 bonded to carbon bonded to CH2 Br. So whatever is in the straight chain, that means whatever is there in the non-bracket form, you will write that first. Now, this carbon, it has what? C2H5, 2C2H5. That means you have CH2 CH3 like this, and then you have CH2 CH3 like this. This is how you are going to write the structure. चलिए, ये structure आपको मिल गया. This is your structure. Now what you have to do? चलिए, Fahad, you will turn your mic on. Fahad, turn your mic on and tell me. Functional group बताइए क्या है Fahad? What is the functional group? Tell me, Fahad. Yes, sir. What is the functional group in this structure? ये समझ में आया कैसे इसको ये ऐसे कन्वर्ट करते हैं? Yes or no? First tell me that. Sorry. Can you tell again? Tell again. ठीक है. बताइए हमने सबसे पहले क्या कहा बताइए. You must have heard it, no? What did I say first? नहीं याद. I said ignore brackets.
Okay, then write the others in straight chain. Then add the bracket terms. ठीक है, तो ये तो दिख रहा होगा ना आपको ब्रैकेट में कौन से हैं कौन से नहीं है। आपको पता है CS3 होगा ऐसे, राइट? CS3 इज वन एंटिटी फॉलोड बाय द कार्बन। अभी इस ब्रैकेट को इग्नोर कीजिए, अगला क्या है? CH2 है। फिर अगला क्या है आपके पास? Br है। जो भी नॉन ब्रैकेट वाले उसको लिख दिया आपने। अच्छा फहद, अब समझ में आया? ये सो नॉट टेल मी द फर्स्ट स्टेप। Yes, sir. अब बताइए, इस कार्बन को कोई बॉन्ड की जरूरत है? दिस इज कार्बन नीड एनी बॉन्ड? ये 4 बॉन्ड बन गए इसके, No. है ना? बन गए इसके 4 बॉन्ड ना। सो नाउ दिस कार्बन नीड्स 2 बॉन्ड्स एंड देखिए दिस कार्बन, इसके आगे कौन सा ग्रुप है आपके पास? C2H5। C2H5 इज व्हाट? इट इज शॉर्ट फॉर CH2CH3, 2 कार्बन and you have 5 hydrogens like this. Then here also there will be CH2CH3 because C2H5 कितने बार है? 2 बार। Any problem till here? No. What is the functional group? Tell me now. Okay, Adriel and Josefa, you understood now how to convert this condensed to expanded form? Yes, sir. Okay, fine. Functional group बताइए। None. So E. Unsaturation? AN. ठीक है, अब पेरेंट में क्या करना है आपको? टर्मिनल चूज करना है। Now look at the structure and tell me how many terminals are there. Look at the structure and tell me how many terminals are there. Terminal का मतलब उस कार्बन के बाद there is no other carbon. After that carbon there should be no other carbon. कार्बन के अलावा कुछ और हो सकता है, but there should be nothing other than nothing. There should be no more carbon other than the last carbon. बताइए लास्ट कार्बन कितने हैं हमारे पास स्ट्रक्चर में? Was it 4? फहद देखिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। Can you please turn the mic on, फहद? Yes, sir. ध्यान से दीजिए, स्टार्ट कीजिए आप। The 2 terminals, ए- right? नहीं, आप उंगली रख के देखिए, ऐसे बताइए। अरे कितने कार्बन कितने हैं यहाँ पे? फहद बताइए तो, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? टर्मिनल छोड़ दीजिए, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 7. काउंट 1 2 3। हमको आवाज आनी चाहिए। आई नीड यू टू वर्क। ऐसे नहीं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं इस तरह के बच्चे जो वर्क काम नहीं करना चाहते। आंसर हमको नहीं चाहिए, यू डू द वर्क। ऐसे उंगली रखिए कार्बन के ऊपर, स्क्रीन में बोलिए 1 2 3 इस तरह से। कीप योर माइक ऑन एंड काउंट ना। 7 कार्बन। ठीक है, अब देख के आप इतनी देर से सोच रहे थे बोलने के, ऐसा नहीं होता कभी ना। काउंट कीजिए, काउंट कर लिया आपने? नाउ कीप योर फिंगर अगेन एंड द फर्स्ट कार्बन। रख दिया आपने? नाउ टेल मी, इज देयर एनी कार्बन आफ्टर दैट, या फिर बस वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है? After that, it's 1 carbon. है ना, बट इट इज जॉइंड विद हाउ मेनी कार्बन? ओनली 1 कार्बन, राइट? Yes. है ना, दैट ओके। इफ इट इज जॉइंड विद ओनली 1 कार्बन, दैट इज देयर इज नो कार्बन आफ्टर दैट, यानी कि दिस फर्स्ट कार्बन, इसके बाद इसके इधर कोई और कार्बन नहीं, इट इज द एंड, राइट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सेकंड कार्बन के पास जाइए, बताइए। Attached 4 carbon. हाँ, है ना, वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज नॉट द एंड, करेक्ट? Yeah. राइट, यस और नो? सो वी हैव दिस Yes. ए टर्मिनल। ठीक है, अब उसके बाद इस कार्बन के पास जाइए, हाथ रख के बताइए टर्मिनल है या नहीं है? इसके आगे पीछे है कार्बन या नहीं है? आगे है, पीछे भी है, हाँ, नीचे है भी ना? है. नीचे भी है ना, पीछे मतलब like उससे पहले भी है। ठीक है, तो ये तो टर्मिनल नहीं होगा, राइट? दिस इज नॉट द टर्मिनल, करेक्ट? Yes. अब इस कार्बन के पास जाइए, उंगली रख के बताइए वो होगा टर्मिनल. टर्मिनल होगा। ठीक है, जब पहली बार आपने 2 कहा था तो ये टर्मिनल था? जब पहली बार आपने 2 आंसर किया था शायद, तो आपको क्या ये था टर्मिनल आपके ध्यान में? No, sir. नहीं था? कैसे आया? हमने बताया क्या आपको कि ये टर्मिनल होगा? हमने बताया क्या? जी.
हाँ, हमने बताया, हमने तो बस बोला कि उंगली रख के बताइए ये कि टर्मिनल है या नहीं, तो बताया तो आपने ना कि हाँ ये टर्मिनल होगा, राइट। सो द ओनली थिंग दैट पीपल देन स्टूडेंट लैक इज द वर्क। ये उंगली रख के ना ये जो है ना, दिस बोरिंग थिंग दैट यू हैव टू डू, इसको ध्यान में रखिए, ये करना पड़ेगा तभी सही आंसर आएगा। ठीक है फायर? जी सर। ठीक है, जल्दी नहीं होगा कुछ, आराम से कीजिए, फिर उसके बाद जल्दी आ जाए। अच्छा, अब यहाँ तो हो गया, इस कार्बन को भी हमने देख लिया था। इस कार्बन से पूछिए आप, क्या इसके आगे पीछे कार्बन है या फिर सिर्फ एक ही साइड कार्बन? लेफ्ट साइड है। बस, है ना, तो ये लास्ट कार्बन है, राइट। ये सुनो, ये भी टर्मिनल हो जाएगा, सही है, Yes. ये भी टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, सी हो गया। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा शायद कि अब ये भी टर्मिनल हो जाएगा, दिख गया ये तो, इसके लिए आपको उंगली नहीं लगानी पड़ेगी, है ना? Yes. ठीक है, तो मेहनत करने का काम थोड़ा ही है, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बार बार करना पड़ेगा, लेकिन एक बार करना पड़ता है। सीधी कितने टर्मिनल हो गए बताइए? 4. 4 टर्मिनल। ठीक है, अब नाउ यू हैव टू चूज द पेरेंट। हाउ विल यू चूज द पेरेंट? यू विल स्टार्ट विद दैट टर्मिनल which is nearest to the functional group BR. बराबर। तो ये सी तो होगा ही होगा, है ना, C. यानी कि सी आपके पास होगा ही होगा। अब सी के बाद आप इस कार्बन में जाइए। अब बताइए, हम बी की तरफ जाएं, ए की तरफ जाएं या डी की तरफ जाएं? किधर ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं आपको? वेयर डू यू सी मोर कार्बन? किस तरफ दिख रहे हैं, ए की तरफ, बी की तरफ या डी की तरफ? टेल मी। B. डी की तरफ, है ना, बी और डी में सेम ही दिख रहे हैं, तो कोई एक भी आप चूज कर सकते C हैं and इसमें। D. तो बी एंड डी दोनों में सेम। सो दिस इज गोइंग टू बी माई पेरेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका पेरेंट हो गया। Yes. ठीक है, अब बताइए कितने कार्बन है पेरेंट में? हाउ 4. मेनी कार्बन आर? सो इट विल बी व्हाट, 4 कार्बन, दैट मींस इट इज ब्यूट। ठीक है, देखिए, वन थिंग दैट आई वांट यू टू फोकस इज दैट आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू आर आंसरिंग थिंग्स। ठीक है, so what is more important? The questions are more important because the questions will be same in each and every problem that you are doing, in each and every molecule my questions will be same, आपके आंसर्स अलग होते जाएं। तो आप आंसर्स पे कम फोकस करके सवालों पे ज्यादा फोकस कीजिए कि सर सवाल हमसे क्या करें जो हम सही जवाब दे रहे हैं, राइट। So if you are giving right answer here and if you ask the right question then you will be giving the right answer in further questions also. अब उसके बाद क्या है, unsaturation we have what? Unsaturation. Now what is unsaturation? Whatever remains after the identification of functional group, unsaturation parent is unsaturation, right? Sorry, unsaturation लिख दिया हमने, बताइए substituent. I don't know why I wrote unsaturation. Substituent, sorry. So what is substituent? Anything that remains after puff parent unsaturation functional group is substituent. तो कौन कौन से substituent हो गए यहाँ पे हमारे पास? We have Br and we have this one substituent and we have this one substituent. Clear है सबको? Yes or no? Please tell me. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes. Right. What about others? Adriel, Huzaifa, आप लोग को आ रहा है ना? Yes. ठीक है, किसी ने शायद 3 टर्मिनल ही बोला था, शायद हुजैफा थे ना? हुजैफा, यू सेड 3 टर्मिनल्स, राइट? Yes, sir. लेकिन क्या ख्याल था आपका, लाइक बी एंड डी सेम टर्मिनल है इस वजह से आपने बोला था, या फिर आपको दिखाई नहीं दिया था कोई एक साथ? CH2 नहीं दिखाई दिया था क्या आपको, है ना? ये नहीं टर्मिनल सर, नहीं लगा बट था। वो 10 नॉट एट द एंड, राइट? उसके आगे ब्रोमीन भी है। नहीं, वो टर्मिनल है ना, टर्मिनल कार्बन ना। Yes, I thought we look at the bromine as well. नहीं, टर्मिनल कार्बन, इस वजह से हम थोड़ा सा फोकस करें टर्मिनल कार्बन एटम। टर्मिनल एटम तो नहीं है, टर्मिनल कार्बन ना, कोई भी यहाँ पे कार्बन टर्मिनल एटम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद हाइड्रोजन तो कम से कम लगा ही हुआ है, राइट? ठीक है, सो नाउ सब्स्टिट्यूएंट व्हाट डू वी हैव? वी हैव ब्रोमो, देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव दिस 2 कार्बन्स। 2 कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एथ मेथ प्रोप ब्यूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर 2 कार्बन्स? एथ, है ना। अब एथ के बाद हम YL लगाएंगे ये बताने के लिए कि ये पेरेंट नहीं है भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट है। What we will add? We will add the YL, and YL is telling me that this ethyl, this 2 carbons, these are substituent and not the parent. देखिए, पेरेंट में से ब्यूट होता है। Similarly, this CH3 is there, so इसके लिए क्या यूज करेंगे? methyl। क्लियर है सबको? ये सुनो प्लीज टेल मी।
Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. So if it's not in the parent chain, you should add YL. नहीं, वो substituent में होगा तो YL. Okay. हम जो बोल रहे हैं वही याद रखो, ठीक है? If any alkyl group is present, then how are you going to name that alkyl group? Just look at the number of carbon atoms, then choose the phrase or word term which represents that number of carbon atoms. If you have 2, it will be N. Then add YL, and that will tell you that it is substituent. Okay. Now what we have to do? We have to do the numbering. Where will I start the numbering from? Which terminal? Let us say that this was B terminal and this was C terminal. I think, I don't know. I don't remember now. So where should I start the numbering from? B or C? Where should I start? Where should I start the numbering from? C. फहद, आप क्या बोल रहे थे? C. C. So 1. This carbon will be 2. Number 3, and this carbon will be 4. So you can see that bromo is in which carbon? It is in the first carbon. Ethyl is in which carbon? It is in the second carbon. Ethyl is in which carbon? It is also in the second carbon. ठीक है? Any problem till here? Any problem till here? Tell me, yes or no? Array, in identifying and numbering the substituent, is there any problem? Fahad, Huzaifa, Adriel? No, sir. No. Now, how to write the name? Now you can write the bromo first or the ethyl first or the methyl first, then you will always be confused. So IUPAC said that whenever you are going to write the substituent, then the substituent should be written in the alphabetical order. That means bromo will be written first, followed by ethyl, and then followed by methyl. So you'll be naming this as 1 bromo, 2 ethyl, 2 methyl, butane without any spaces. चलिए इस नाम को लिखिए. Let me know when you're done. Done all of you? Yes or no? Please tell me. The next 2 problems you will do as a homework, and also I will be giving you assignments. Okay. Mohammed Umar, yeah, sure. I will answer your question, but just wait for others. ना बिल्कुल 8 बजे जाना है क्या आपको? I mean, हाँ, I have. ZnCl2 is used as a catalyst because OH is a bad leaving group. Okay, OH is a bad leaving group. I will. सबने लिख लिया ये? Yes or no? Please tell me. थोड़ा सबर मोहम्मद उमर सबर. Done all of you? Okay, fine. So these 2 questions will be homework. Okay. And then the rest, what we will do? We will do preparation of haloalkane haloarene in the next class. Chali. Okay. So you all can leave. Mohammed Umar has asked a question that is related to the preparation of haloalkane and haloarene. Can you scroll up? Sorry? Can you scroll up?
आपको आंसर चाहिए या स्क्रॉल अप करें हम, बताइए। No, I'm writing the question for the homework. हाँ तो लिखिए, ये होमवर्क उसके बाद असाइनमेंट भी रहेगा, ठीक है, यू हैव टू डू दोस आल्सो। कब है आपका टेस्ट, किसका टेस्ट है आपका मोहम्मद उमर? So it is English tomorrow. इंग्लिश है, अच्छा इंग्लिश के लिए आपको प्रिपेयर करना है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. So what's the answer? The answer is OH is bad leaving group. Bad leaving group. You know what is leaving group? Not exactly. Not exactly. अरे SN1 पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा है SN1? SN1 नहीं, SN1 नहीं, SN2 नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोअल्केन हैलोअरेन में नहीं आया ये अभी तक? लेकिन मतलब चैप्टर में है लेकिन मैं पढ़ा नहीं। अच्छा SN1 SN2 नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है। तो देखिए वो ऐसे होता है ना रिएक्शन, you have ROH हाँ। plus HCl, the presence of ZnCl2, it is going to give you RCl हाँ। plus what, tell me? ठीक है वो छोड़ दीजिए आप। H2O आता है, ठीक है, H2 आता है, H2 it will be like this HOH ना, है ना? तो ये जो OH है आपका, this is the OH from the alcohol, ठीक है। So alcohol left the carbon chain, that is why it is known as leaving group, ठीक है। This is known as leaving group. Bad leaving group का मतलब क्या होता है? The ROH bond is strong, okay? This bond is strong and it is not very easy to break. That is why we say that it is a bad leaving group. इसके लिए क्या करते हैं? There are two things that you can do. You can either protonate it. इसमें आप पहले H+ डाल दीजिए खूब कस के। तो H+ क्या करेगा? ये लोन पेयर है, ये ऐड करेगा and then you will have ROH and H. अब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, right? Because oxygen has donated one of the electrons and it has paired with H+ ion. अब ये वाटर को रिमूव करना आसान है, बिकॉज वाटर इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। जब भी आपके पास इस तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे, देन व्हाट यू विल डू, यू कैन इजीली रिमूव इट, बट दिस इज अ बिट ट्रिकी थिंग टू डू, दिस इज अ बिट ट्रिकी थिंग टू, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, ZnCl2 यूज करते हैं। वी नो दैट ROH है आपके पास, अब क्या है ZnCl2। Zn is combined with what? It is combined with Cl2, which is a electronegative element. And obviously zinc is what? It is a metal, and it is metal. Metal has a tendency to lose electrons. So this will obviously be having delta positive or some positive charge. Pure positive charge also can be present. So this oxygen, what it does, it donates the electron here, because obviously whenever you have electron lone pair electrons and you see some positive charge, electron negative charge या positive charge देखेगा तो वहाँ पे electron पे donate करेगा. And what will happen? You will get something like this, O and ZnCl2. Okay, and here you will get hydrogen. So this will be a positive charge. Now zinc is what? Zinc is from D block, and D block elements, they have a tendency that they can have variable oxidation states. They can have variable oxidation. आपने पढ़ा होगा जब हम redox reaction पढ़ रहे थे, तो उसमें Mn का +5 भी हो जाता था, Mn का +2 भी हो जाता था, right? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Right? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये क्या कर सकता है, इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज हो सकते हैं। सो ZnCl2 2 भी बॉन्ड बना रहा है, 3 भी बॉन्ड बना सकता है। दैट इज व्हाई वी यूज जनरली, जब भी आप देखिएगा कैटलिस्ट में पैलेडियम, प्लैटिनम, ZnCl2, सो दीस टाइप ऑफ मेटल्स आर यूज्ड व्हिच कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, जो अपनी बॉन्डिंग स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। नाउ इट इज इजियर फॉर दिस मॉलिक्यूल टू लीव, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोकेटाइन R+ मिल जाएगा। यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ ZnCl2? इट इज यूज्ड टू ease up the removal of OH, ठीक है, it is used to ease up the removal of OH from the carbon chain. Clear है ये सब? Tell me. Yes, sir. Clear है? Okay, चलो, fine. अच्छा, anyone other who has any doubt, Adil, Huzaifa, regarding today's class or any other class? अच्छा, Mohammed Umar, wait, Mohammed Umar, please wait. Please see this. You will have a subjective test on Wednesday. This test will be during class hours, and the topic is osmotic pressure and abnormal molar mass. Okay. Sir. Okay, fine. Chaliye. I think Adriel and Huzafa, you also got this. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Thank you very much. Sir, can you go to like Wednesday's class notes? I want to check the alkyl halides, aryl, vinyl. I don't know if I wrote it properly. बताइए किसमें? To secondary.
हाँ The examples. क्या हो गया? एक्सप्लेन करना है क्या कुछ? No, I just didn't write it. अच्छा, नॉट राइट.